Hello everyone, I hope you're doing well. Greetings to you. So in today's video, I'm going to talk about cell cycle. It is the topic of MZO001, that is the subject of MSc Zoology, and the full form of this MZO001 is basically molecular cell biology. Okay, so molecular cell biology for the topic that I'm going to cover in today's session, that is cell cycle. It is MSc Zoology first year subject. Okay, so let's start with our video. So we are going to talk about cell cycle. In cell cycle we are going to talk about cells. So let's first talk about the features of cell. So there are four main features of cell that we need to understand. फर्स्ट वन इज हमने 9th में भी पढ़ा है, हमने स्कूल में भी पढ़ा है, हमने BSc जब हमने करी तब भी हमने पढ़ा है. क्या पढ़ा है? दैट सेल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, fundamental and functional unit of life, because cells are the building blocks that make our whole body, right? We are multicellular in nature. Why? Even the unicellular organism also has a one cell, a single cell. Zygote is a single cell, right? When zygote multiply, then it create a whole new microorganism, a whole new animal or a human being. Okay, so that is the first point. Cells are the fundamental building blocks of our body. सेकेंड वन, their structural significance, their structure. आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं. नर्व सेल्स, ओके, गैमीट्स, देयर आर 2 types of gametes, one in the male body, one in the female body, muscle cell. There are number of cells present in our body. So their structural significance, जैसा जिसका स्ट्रक्चर होगा वो वैसा ही फंक्शन करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल सिग्निफिकेंस. इफ वी टॉक अबाउट न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी एंड दे ट्रांसफर ऑल द सिग्नल्स टू आवर ब्रेन. वट एवर वी सी, वट एवर आर सेंस ऑर्गन सेंस इन आवर सराउंडिंग, दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू आवर ब्रेन एंड देन ब्रेन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, राइट? सो दैट इज द स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंस. उनके उसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनका फंक्शन सिग्निफाई होगा एंड देन दे स्टार्ट टू वर्क एंड फॉर्म अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ इट, right? Next beta, next that we're going to talk about is ability to self replicate. Cells are able to replicate themselves. Replication का मतलब क्या होता है? Division. Cells are able to divide themselves. Division हो रहा है तभी तो we are multicellular in nature. अगर single cell होते तो हम भी अमीबा की तरह होते. Single cell होते binary fission करते, that's all, right? But why we are multicellular? Because the cells have the capability to self replicate. Okay, so these are the 4 features of cell. Now we're going to start with cell. Now we're going to talk about cell cycle. So first thing जो हम discuss करेंगे, that is who discovered it. So who discovered cell cycle? That is Howard and Pelly in 1953. These two peoples together discovered the cell cycle. In which year? 1953. Okay, in cell cycle the 2 main phases that we're going to talk about is interphase. Okay, interphase is the longest phase. Okay, so if we're going to talk about which is the longest phase, so interphase is the longest phase in the cell cycle. If cell cycle suppose 24 hours में 24, it take 24 hours for a cell to divide, okay, into 2 daughter cells suppose. Okay, so if we talk about 24 hours, so that means 21 to 23 hours सिर्फ इंटरफेस में ही रहेगा एंड लास्ट के 1 or 2 hours में it will go into the last phase, that is the M phase or the division phase. M phase मतलब mitotic phase. ओके, सो ये मैं आपको बताऊंगी आगे पूरा डिटेल में क्या क्या है. अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ. सो सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेन फेज. फर्स्ट वन इज द इंटरफेज एंड लास्ट वन इज द एम फेज एंड डिवीजन फेज. ओके, नाउ इंटरफेज के अंदर कुछ सब टाइप्स हैं. दैट इज फर्स्ट फेज जो इंटरफेज का होता है, दैट इज अ G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज. G1 फेज को हम बोलते हैं गैप 1 फेज ऑल्सो. S फेज मतलब सिंथेसिस फेज एंड G2 मतलब गैप 2 फेज. ओके, और इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज. ये हो गया हमारा डीएनए रेप्लिकेशन फेज, S फेज, एंड G2 हमारा क्या हो गया? पोस्ट DNA replication phase. Okay, so this is the overview of cell cycle. Now one by one we're going to talk about each and every phase in detail. Interphase. So interphase is the first phase of cell cycle. Interphase is the phase that exists before M phase. बिफोर एम फेज से पहले, डिवीजन फेज से पहले जो फेज होता है उस पूरे फेज को हम बोलते हैं इंटरफेस. ओके, नाउ व्हाट इज अ फीचर, व्हाट हैपन इन द इंटरफेस? इन इंटरफेस स्पेशली सेल ग्रो करता है पहले.
अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन, राइट? सो सेल ग्रो एंड रेप्लिकेट इट्स जीनोम एंड ऑर्गेनली. रेप्लिकेशन क्यों हो रही है? बिकॉज 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं. डीएनए अपने आप को और ग्रो करेगा सो दैट वो इक्वली डिवाइड हो इन द 2 सेल्स. सारी ऑर्गेनलीज, आपको पता है सारी ऑर्गेनलीज क्या क्या होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. हर एक टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे स्लोली स्टेडीली. अभी हमारा फोकस है सेल साइकिल पे. ओके, सो सब कुछ डिवाइड हो रहा है सेल के अंदर, सब कुछ ग्रो हो रहा है सो दैट सेल कैन डिवाइड ईच एंड एवरी पार्ट इनटू 2 न्यू डॉटर सेल equally. Okay, no discrimination, equal division will be there, right? Now it is the longest phase, as I already told you. ठीक है, 92 to 95% of the time when the cell cycle is happening, cell is in this phase only. Okay, and it time मतलब मैंने आपको बताया था 24 आवर के बेसिस पे. तो अगर 20 to 4 आवर्स की साइकिल है तो 21 से 23 आवर्स तक सेल इसी फेज में रहता है, इंटरफेज में ही रहता है. देन इट रीच टू एम फेज और डिविजन फेज. Okay, now last one is divide into 3 phases: G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, then S phase and G2 phase, and then हम लास्ट में डिस्कस करेंगे M phase के बारे में. All right. Okay. So let's start with first subtype of interface. Okay, so first subtype is G1 phase, or you can call it first gap phase, or you can call it pre-DNA replication stage. It's up to you. All 3 are same, different name है of the same sub type of interface. Okay, it's the first part where actually the interface starts. Okay, so this is the longest phase. अभी हम इसके सारे points एक एक करके discuss करेंगे डिटेल में, so that you will understand the G1 phase properly and you can frame your own answer confidently in the exams, right? So the cell are highly active metabolically in this stage, because cell need to grow, cell need to prepare itself for the division, right? So cell is highly active in metabolically and continue to grow. That's the first point. Second point, cell organelles multiply and synthesize various proteins and RNAs. Cell जो organelles हैं, different organelles हैं, they are multiplying, okay, and they are synthesizing various types of proteins and RNA so that the replication will happen in the S phase, right? Next beta, cell increase in size. Cell will increase its size, okay, because cell need to divide into 2 daughter cell. So cell need to be mature enough, grown enough and big enough. Okay, now and develop the most during G1 phase. सबसे ज्यादा डेवलपमेंट G1 फेज में ही होती है. ओके, सो एज मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर अवेलेबल, क्योंकि प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज हो रहे हैं. प्रोटीन आपको पता है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है. अगर प्रोटीन अवेलेबल है तो ग्रोथ होगी अच्छी खासी, राइट? यू कैन कनेक्ट करोगे, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ बेटा, सेल सिंथेसाइज वेरियस प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द एस फेज. सेल क्या कर रहा है? सेल सिंथेसाइज कर रहा है वेरियस प्रोटीन्स एंड एंजाइम जो रिक्वायर है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. किस टाइम पे? एस फेज में. तो इसी टाइम पे जो प्रोटीन और एंजाइम्स जो सब कुछ रिलीज हो रहा है, दैट गोइंग टू हेल्प डीएनए रेप्लिकेशन इन द एस फेज, इन द सेकेंड फेज. Okay, so I hope these points are clear to you. You can take screenshot if you want. You can prepare your own notes, or it is a handmade note for you. You can just keep it with you and you can read whenever you want to read it again and again for the revision purpose. Now I'm going to tell few more points regarding the G1 phase, then we switch to S. Now there are few more points that we need to understand regarding the G1 phase. As I already told you these points, it is the longest stage. Okay, it is the longest stage in the G1 स्टेज और फेज. ओके, इन द इंटरफेस की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन से? अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में तो यू विल से G1 स्टेज. ऑलराइट, इट टेक्स 6 to 12 आवर्स, मतलब 24 आवर्स की साइकिल है और 24 आवर्स में से 12 आवर्स जो सेल है वो इसी फेज में है, because cell is growing, cell is preparing itself for the replication. Okay, various types of proteins and RNAs are synthesized in the cell is increasing its size. Okay, so everything is happen in this phase only, all these things, right? Next beta, chromosome uncoil. आपको पता है क्रोमोसोम एक coiled structure है. We all know that it's a helical structure, right? So chromosome क्या करता है? खुद को uncoil करता है in the form of reticulum. Reticulum का मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. स्मॉल थ्रेड, स्मॉल वेन्स में खुद को क्या कर लेता है? अनकॉइल कर लेता है. ठीक है, इस फेज में. नेक्स्ट बेटा, लास्ट वन, वेरियस सेल साइकिल रेगुलेटर्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस एक्टिव फेज. अलग अलग टाइप की सेल साइकिल को जो रेगुलेटर्स हैं, जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, वो भी इसी टाइम पे रिलीज होते हैं, जो हेल्प करते हैं इन दी एस फेज, इन G2 फेज, इन M फेज. वो सारे रेगुलेटर्स भी इसी टाइम पे सिंथेसाइज हो जाते हैं इन द सेल.
और इस फेज को बेटा एक और नेम से बोला जाता है एक्टिव फेज। अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाए कि एक्सप्लेन और डिफाइन एन एक्टिव फेज, तो मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जीवन फेज को आपको एक्सप्लेन करना है, इंटरफेज के सिर्फ जीवन फेज को, क्योंकि जीवन फेज का एक और नेम है दैट इज द एक्टिव फेज। ऑलराइट, सो ये सब था हमने जो जीवन फेज के बारे में डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं एस फेज पर और सिंथेसिस फेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस फेज। एस फेज का नेम क्या है, डीएनए सिंथेसिस फेज। It is the second stage in interphase. Okay, so this phase takes 6 to 8 hours to complete. That is the first thing we need to understand. Okay, it happens after G1 phase. Just after G1 phase, the synthesis phase or S phase starts. It is the second stage in interphase. Okay, so now what happened in this stage beta, you need to understand. First one is formation of histone protein. Histone protein form होने start हो जाते हैं so that the replication can take place. राइट, सेकेंड थिंग डिप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स डिप्लीकेट होते हैं, जब तक सेंट्रियोल डिप्लीकेट नहीं होंगे तब तक डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। राइट, देन लास्ट पे क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। देन फिर लास्ट में डीएनए क्या करता है, जब ये दोनों चीजें हो जाती है देन डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, हम डीएनए को डबल करते हैं। अगर डीएनए सपोज 2C अमाउंट में है तो इट विल चेंज टू 4C, डबल हो जाता है डीएनए का अमाउंट, बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। अगर सपोज करो ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड आप लोगों को पता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, अगर हैप्लॉइड है एन है, ठीक है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो एन ही रहेंगे। अगर डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, अगर 2N क्रोमोसोम है तो 2N क्रोमोसोम ही रहेंगे, बस डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट्स ऑल। So this all happens in the S phase or DNA synthesis phase, that is the second stage. All right, now let's talk about the third stage or the subtype of interphase, that is our G2 phase. Now let's talk about G2 phase, second gap stage, or we call it post DNA replication stage. These are all the names of it. Okay, so it happens just after the synthesis phase. Synthesis phase के just बाद हमारा कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है, G2 फेज। ओके, सेकेंड गैप स्टेज। ऑलराइट, देन इसमें क्या करता है, बेसिकली सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है फॉर एम फेज, फॉर द डिवीजन, फॉर द फाइनल डिवीजन, दैट इज द फाइनल फेज, दैट इज द एम फेज और द डिवीजन फेज। ओके, सो बाय सिंथेसाइजिंग द ट्यूबुलाइन प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर। इस टाइम पे कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ट्यूबुलाइन प्रोटीन, सो दैट स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो एंड इट गोइंग टू हेल्प इन द replication of DNA. Okay, DNA replicate, DNA कह रही हूँ, सॉरी, सेल प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। राइट, सो स्पिंडल फाइबर की फॉर्म में क्या होता है, सेल्स, वो जो डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है। नाउ सेल इज टेट्राप्लॉइड। सेल क्या है बेटा, टेट्राप्लॉइड है। टेट्राप्लॉइड मतलब 4, बिकॉज एवरी क्रोमोसोम, बेसिकली बेटा हम जैसे हमारा ऑड इवन होता है, तो इवन आप लोगों को पता है, ठीक है, इवन ऑड आपको पता ही है ऑलरेडी, तो सेल इज टेट्राप्लॉइड सो दैट इक्वल डिवीजन विल टेक प्लेस, because every chromosome has 2 copies. Okay, so has been replicated and thus contain 2 DNA molecule, ताकि हर एक के पास equal amount of DNA जाए। ओके, अगर 3 और ऐसे 7 नंबर्स होंगे तो it is hard for to replicate, so that's why it is tetraploid in nature, so that equal amount of DNA molecule will be transferred in both the cells. Okay, so it takes 3 to 4 hours to complete, so this whole cycle takes 3 to 4 hours to complete. So this is the G2 phase. Now G2 phase ends. Now let's talk about M phase or division phase, the final phase of cell cycle. Then we are done with the cell cycle. So let's start with the final phase, that is the M phase or the division phase. आपको phase के नाम से ही समझ आ रहा होगा that division phase is basically the cell division. Now the cell is going to divide into 2 daughter cells, 2 different cells, but they are identically similar, ठीक है, because they get everything from their parent cell. Okay, so in this M phase, basically 2 type of nuclear division happen, mitotic and meiotic. Mitotic का मतलब basically बेटा क्या होता है, when the same thing just split into 2, that is the mitotic, they are identical to their parent. meiotic मतलब वहाँ पे कुछ changes हुए, that is the meiotic division. इन दोनों डिवीजन के बारे में हम इसके आगे वाले क्लासेस में, सेशन में डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल के बाद हमारा वही टॉपिक है, पहले हम meiotic डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन डिस्कस करेंगे, देन हम meiotic डिवीजन प्रॉपरली इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे होती है सेल के अंदर। ठीक है ना,
टाइम इसको लगता है 1 to 2 आवर्स ओनली, राइट। ये सबसे छोटा फेज आप बोल सकते हो। नाउ रीऑर्गेनाइज मोस्ट सेलुलर कंपोनेंट, जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं अब इक्वली डिवाइड हो गए। नाउ दे गोइंग टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन द सेल प्रॉपर्ली, टेक देयर पोजीशंस प्रॉपर्ली सो दैट दे कैन स्टार्ट विद द फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन बेटा, एक होती है कार्योकाइनेसिस, एक होती है साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियर डिवाइड हो रहा है तो क्या वर्ड यूज कर सकते हो आप, न्यूक्लियर डिवीजन भी यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज द वर्ड कार्योकाइनेसिस। जो आपको याद हो रहा है वो याद कर लो, डजंट मैटर, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को और क्या कह सकते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वर्ड याद कर लो, या फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, या फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट्स ऑल। सो दिस इज योर एम फेज और द डिवीजन फेज। अब बेटा ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब सेल डिवाइड हो रहा है, बट कभी तो ऐसा टाइम आता है ना सेल की बॉडी के अंदर जब सेल को डिवाइड नहीं करना, ओके। जब सेल को बस क्या करना है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहना है, अपने सारे फंक्शंस करने हैं, बट डिवीजन नहीं करना है, ओके। क्योंकि अगर सेल डिवाइड होता रहेगा, आपको पता है कि अगर सेल अनवांटेडली डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, इट कैन बी कार्सिनोजेनिक, राइट। हम सबको पता है कार्सिनोजेनिक मतलब इट कैन कॉज कैंसर्स, राइट। सो सेल का जो अनवांटेड डिवीजन है वो रोकने के लिए सेल के अंदर एक और फेज होता है जिसको हम बोलते हैं G0 या GO फेज। ये जो G0 फेज है, इसमें जो सेल है वो क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, अपने सारे फंक्शंस कर रहा है, बट डिवीजन नहीं कर रहा है। जब उसको सिग्नल आएगा, जैसे हमारे जो कार्डियक सेल्स होते हैं, हमारे जो हार्ट के सेल्स होते हैं, वो हर टाइम डिवाइड नहीं करते, वो एक सर्टेन अमाउंट तक ही डिवीजन करते हैं, उसके बाद वो रुक जाते हैं, ओके। और हमारे सेल्स भी कब डिवाइड करते हैं, जब बॉडी से, ब्रेन से सिग्नल आता है कि अब आपको इंजरी हो गई है, उसको हील करना है, या चोट लग गई है, उसको, इंजरी चोट एक ही चीज है, उसको हील करना है। जब सिग्नल आता है तब डिवीजन होती है। जैसे जब जिम जाते हैं लोग तो मसल ब्रेक होती है, तो जब हम उसको प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, तो उससे क्या होती है, मसल क्या करती है, खुद को दोबारा से रिपेयर करती है, तो वहां पे तब डिवीजन होती है, क्योंकि तब सिग्नल गया कि डिवाइड होना है। तो जब तक सिग्नल नहीं जा रहा तब तक सेल कौन से फेज पर है, G0 फेज पे, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अपने सारे फंक्शंस कर रहा है, बट डिवीजन नहीं कर रहा है, सेल साइकिल नहीं हो रही है। सो इस फेज को भी याद रखना, दिस इज द फेज जहां पे सेल मोस्टली रहते हैं। जब उनके पास सिग्नल जाता है, देन दे स्टार्ट देयर सेल साइकिल बाय फर्स्ट इंटरफेज, देन last phase is the M phase or division phase, and in interphase there are 3 sub phases, G1 phase, S phase and G2 phase. So I hope this session is helpful for all of you, okay, and I'll catch you in the next session. Thank you so much for watching.